Good morning students, my name is Suvas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So we are already starting chapter number 2 of the power system operations and controls, and the first chapter is already started. The chapter name is the automatic generations and the voltage control. So start with the new topic. We can see the overview of the last lectures or last topic. So in the last topic name is the automatic generations control and the load frequency controls. The first question is need of the frequency control. जैसे हम जानते हैं कि हमारी पूरी सिस्टम फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड्स है. अगर इंडिया है तो 50 हर्ट्ज एंड दी ब्रिटिश है तो या यूएसए है तो 60 हर्ट्ज. So the motor load are mainly affected by change in the frequency. We know that. So if the dropout is the 1%, the frequency result is 2.5 to 3% drop in the out of the motors. यानी कि अगर हम 1% फ्रीक्वेंसी ड्रॉप आउट करते हैं यानी कि कम करते हैं तो आउटपुट में 2.5 to 3% इफेक्ट होता है. So at the low frequency turbine blades can get the damage. At the lower values of the frequencies, the core losses in the transformer becomes large and the transformer core goes into the saturating regions. So they are affect our power systems and generate the harmonics and another losses in the power systems. So the need of the frequency is two generating stations can be shared the load. अब जनरली हमारा जो पावर सिस्टम्स होता है उसमें एक जनरेशन कनेक्टेड नहीं होता है. देयर आर दी शेयर द लोड्स ऑफ द डिफरेंट जनरेटर्स. सो अगर 2 जनरेटर्स है तो फर्स्ट वन इज फ्लैट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल यानी कि एक जनरेटर से पावर जनरेट होता है और दूसरे में ट्रांसमिट होता है. तो देयर आर दी फ्लैट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल. देन आर द पैरेलल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल यानी कि दोनों पैरेलली ऑपरेट है, रन है. देन आफ्टर दी फ्लैट टाई लाइन लोडिंग कंट्रोल एक ही टाई लाइन से कनेक्टेड है. देन सिलेक्ट द फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्स एंड टाई लाइन लोड बेस्ड कंट्रोल्स. सो इफ द पावर सिस्टम कंसिस्ट आर द नोन, अगर पावर सिस्टम हम जानते हैं सो वी कैन इजीली control them for the better operations of the power systems. So AGC यानी कि automatic generations control is a system which adjusts the power output of multiple generations of the different power plants. So to mainly stability of the power grid is generations and the balance load. Then this balance load is accommodated by the measuring the system frequency and the transmission grid is connected to adjust the control area of the tie line in corrections by the AGC. So the AGC system has required information to generating output in megawatt power flow over the each tie line to neighboring the system in the megawatt frequency of the system. यानी कि AGC सिस्टम ऑपरेट करने के लिए हमारे पास दो मेन चीज़ चाहिए. एक तो कितना मेगावाट पावर जनरेट करना है और जो टाई लाइन है उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है वो. देन आफ्टर वी कैन कंट्रोल दी सिस्टम्स. सो द पावर जनरेशन एंड द कंट्रोल सिस्टम्स, ऑल द जनरेटर्स ऑफ द पावर प्लांट आर कनेक्टेड टुगेदर टू form of the group so they can respond to change in the load to change in speed setting the control areas. So the load frequency control and the automatic generations control are playing the important roles. So AGC in a multi-area interconnected power system has the 4 basic functions while operating the normal operation stage. The first one is keep the system of the electrical frequency error is to 0. Consider the 0 systems error. So distributing generations amongst the area generation source so that the area operating cost becomes less than the matching the total system generations to the total system load. We know that जितने
लोड की रिक्वायरमेंट है उतना लोड का जनरेशंस होना चाहिए, एंड द डिस्ट्रीब्यूटिंग द सिस्टम जनरेशंस अमंग द कंट्रोलर्स. So the system is the electrical load systems, then tie line with the EGC systems, then speed changing, then speed governing systems. Then after this type of the जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है उस टाइप का हम जनरेशन चाहते हैं तो उसका वाल्व ओपन करेंगे यूजिंग ऑफ द स्टीम और द वाटर. These are combined with the turbine, and turbine is connected with the generator, and then after if the speed is not appropriate speed, so then again the system is go to the speed, and this system is appropriate speed, then after the generator is connected to the systems. So these are our basic EGC systems. So major functions of the load frequency changing while the transient variations in the frequency and the tie line power with the zero steady state error. If the real power changes, the system frequency changes, while if the reactive power changes, so the reactive active power and the load frequency is called the load frequency controls. The benefits of this control is easy to power flow controls, and increase the loading limitations, improve the power system stability, high system reliability. So this control unit which adjusts the power output of the multiple generators of the different power plants. So three main aims of the EGC. The first one is maintain the each unit generation in the most economical levels, then supply the correct values, and hold the appropriate frequency without any error. So the power transformer between the different areas is known as the net tie line powers. So the main two parts, load frequency control and the AVR systems. So we change the angles, so the delta R. So this system is, you can see that two different system, AVR control and the load frequency controls. So in the last lecture we can see this. Now the today's topic is the speed governing mechanism, mechanical modeling and the frequency control system. So speed governing mechanism means the load consists of a single turbine generating system and the supplying power to the load. So the power system stability depends on the synchronous generator and the performance. So in the last lectures हमने देखा कि how to work the speed governing system. So जो सिंगल टर्बाइन जनरेटर सिस्टम को सप्लाई टू द लोड के साथ कनेक्ट करता है, तो वी नो दैट द स्टीम इज गो टू द गेट और वाल्व. दीज आर कनेक्टेड विद द टर्बाइन. दिस टर्बाइन इज कनेक्टेड विद द जनरेटर एंड द डायरेक्शंस इज ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड दिस जनरेटर इज कनेक्टेड विद द लोड एंड अगेन द गवर्नर सिस्टम्स टू द मेंटेन द स्पीड. तो ये जो है जो सिंगल गवर्नर स्पीड सिस्टम है कि यहाँ पे अगर हमको 14,000 RPM चाहिए, स्पीड चाहिए, तो हियर टू check the sense the speed, and this governing system is to help the operate the valve or gate to maintain the speed. So basically the control loop used in the generating systems for the stability systems, they have the two main parts, the frequency control and the automatic voltage control systems. So in the frequency control system, is achieved by generating the control of generator control, which using of the thermo and the hydro generating plants have the different governing system. जैसे ही हमने आगे देखा कि हम स्टीम और वाटर थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड को और उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं.
But in the case of the hydropower plant, inertia of the water flowing from the turbine is an additional constraint affecting the performance which is not present in the thermal power plant. So the performance which is not performed the thermal power plant, but the basic principle is the same for the speed control of the shaft is detected and compared with the reference value by which feedback signal is increase or decrease the power generating systems. So both the systems have the same working phenomena. So the components of the speed governing system of the steam turbine consist of the following components. So the components of the turbine steam is, the first one is the fly ball speed governing system. So what is the fly ball governors? So in the fly ball governor systems, then after the hydraulic amplifiers, then leakage mechanism, then speed control mechanism, and the speed changers. So now start with the first one. Okay, what is the fly ball speed governor systems? So fly ball speed governor is an error sensing device in the load frequency controls. So it has all the elements that sense to speed and affect the other element of the system to initiate actions and affect the other element of the system to initiate the actions of the stability. So it includes the all elements that are directly response to the speed and influence other elements of the system to initiate of the actions. So we can see the figures how to look the fly balls. यहाँ पे आप देख सकते हो कि they have the one pole and the rotating of the two different poles. अब ये जो balls है वो उसकी स्पीड हम चेंज करके ये अप डाउन कर सकता है. सो दीज आर कॉल्ड द फ्लाई बॉल स्पीड गवर्नर्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोलिक एम्पलीफायर्स. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ पायलट वाल्व एंड मेन पोर्शंस ऑफ द मेन पिस्टन. सो दे आर यूज्ड टू ऑपरेट द स्टीम वाल्व. सो यू कैन सी हियर के हाउ टू इट्स वर्क. अभी यहाँ पे क्या होगा कि जिस तरह का स्टीम होगा उस टाइप के प्रेशर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे सो दे हैव टू रिलीज द स्टीम विद द फोर्स और प्रेशर्स. सो दीज आर कॉल्ड द हाइड्रोलिक एम्पलीफायर सिस्टम्स. देन आफ्टर द लीकेज mechanism, so it is having the two main grid links, have the two rigid links, and these link systems provides the moment to control at the turbine valve with the variations in the speed also on the same time. So you can see the figures. अगर यहाँ पे मैं इस पार्ट को अगर मैं ए बी और सी तीन पार्ट और यहाँ पे मैं डी देता हूँ तो वी हैव द टू मेन लिंक्स. के फर्स्ट वन इज ए बी सी एंड बी सी डी एंड देन आफ्टर हियर टू कनेक्ट द हाइड्रोलिंक्स. सो अगर ये दोनों लिंक को मैं प्रोवाइड करता हूँ तो बी यहाँ पे जो बी पॉइंट है वो मूवमेंट पॉइंट है जिसको बोलते हैं हम पाइवॉट. दिस वन इज द फिक्स पॉइंट एंड दिस टू पॉइंट आर द रोटेटिंग पॉइंट आर मूविंग पॉइंट. सो ए बी सी में बी इज द मूविंग पार्ट एंड द बी सी डी में सी इज द मूविंग पार्ट. So this link system provides the movement to control the turbine valve with the variations in the speed. Also can same the time it also provide the feedback from the steam. Then after the speed control mechanism. So speed control mechanism consists of the various
elements like the lever, then linkages, servo motors, amplifying devices, and the relay, and etc. And these are placed between the speed governor and the governor control valves. So like here, one type of the piston type, we can rotate or moving the one wheels with the होस्ट टू दी अदर. हम ये जानते हैं किस तरह का सिस्टम होता है कि यहाँ पे जो कनेक्टेड होता है जैसे जैसे घूमेगा उस टाइप पे पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम दी जनरेटिंग द प्रेशर्स, जैसे हमने आगे एम्पलीफाइंग में देखा उस टाइप का. तो दीज आर कॉल्ड दी linkages mechanism. Now the next one is speed changers. So it allows the speed governor system to adjust the speed of the turbine generator unit while operations and the speed changing having the servo motors. So it enables the speed governing system to adjust the speed of the generator and the unit while it operating. So the steady state speed regulations is, you can see the figures, equations n0 minus n upon nr, when the n0 means the speed at the load, nr means the rated speed, and n is the speed at the rated load. So how it is possible? So it can be operated manually or automatically for the dispatching the load at the nominal frequency, and it gives the steady state power output setting for the turbine. So its downward movement opens the upper pilot valve to take up more steam of the turbine. So these type of the figures or executions of the speed governing mechanism. अब यहाँ पे जब स्पीड चेंजिंग करना है तो यहाँ पे हम मूवमेंट करेंगे. जैसे ही ए पॉइंट चेंज होगा, दिस टाइप ऑफ द मूविंग पॉइंट विल बी अराइज. यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा एंड अगेन दिस विल बी चेंजिंग एंड डी इज मूविंग द अप एंड डाउनवर्ड एंड प्रेशर विल बी जनरेट इन दिस. अब यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा तो दिस मेन पिस्टन विल बी rotating and the open and close the turbine speed. So these are the mechanism for the speed governing system. So reverse will happen for the upward movement of the speed changers. यानी कि अपर करूँगा यहाँ पे आप स्पीड चेंजर में अगर मैं अप करूँगा तो लोअर स्पीड जनरेट होगी और डाउन करूँगा तो हाई स्पीड जनरेट होगी. और the given speed changing pistons, the per unit steady state regulations is given these equations. अब किस टाइप की स्पीड चाहिए वो इस इक्वेशन से हमको मिल सकती है. So maintaining the real power balancing in the system of the load frequency control, the frequency deviations within the acceptations of limitations. So which limitations will be considered in the speed governing mechanism? The first one is the correction of the steady state frequency devices, यानी कि कोई भी एरर किसी में ना हो. Then after the control of the timeline power flow involving the real and the reactive power and distributions of a load within the available all generating units equally. यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लोड है वो जो लोड कनेक्टेड है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. सो दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ स्पीड गवर्निंग सिस्टम्स. नाउ द मैथमेटिकल मॉडलिंग, जैसे फंक्शंस ऑफ द एलसीआर जैसे मैंने अभी बताया आपको. देन द मैथमेटिकल मॉडलिंग. सो डिपेंडिंग ऑन द स्टीम वाल्व पिस्टन्स, द टर्बाइन prime mover changes its output power to get the real power balancing. So mathematical modeling is divided main 4 parts. The first one is the generator models, then after the load model, turbine model, and the last one is the governor models. Now start with the first, the generator models. So see the figures. Generating system is depends on the delta PM mechanisms and the pistons
with the combinations of the our equations is 1 upon 2h, and this one is the angles. So the swing equations is given of the generating model is 2 times of h d square delta del means the angles omega dt square, which have the difference between the difference of the mechanism motors and the pistons. So simplify these equations of the d omega t delta omega by dt equal to 1 upon 2h pm minus delta pe, which one is given the speed deviations. Here h is the moment of inertia, then pm is the turbine output, b is the load demand, del is the angle, and the omega is the angular speed. So these are the generating model, mathematical models. Now in similar way, the load model, the system load is functions of the frequency independent component and the frequency dependent components, and the load can be written as delta PE. It means the difference of the load demand is equal to the delta P0, the frequency independent load frequency, plus the delta PF, the frequency depends on the लोड फ्रीक्वेंसी, यानी कि P0 है वो इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी है और डेल्टा P है वो डिपेंडेंट लोड कंपोनेंट्स है. सो वेयर द डेल्टा PF इज इक्वल टू D इंटू ओमेगा, where D is the damping constant which represent the load frequency characteristic and give in the present change in the load for the 1%. So if I consider the one examples, if the D values is the 1.5%, then the 1% change in the frequency result into the 1.6% change in the load. So these are the seen in the जनरेटर मॉडल्स हमने आगे देखा. अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट D. आगे जो हमने ये जो जनरेटिंग मॉडल का देखा, नाउ वी कैन कंसीडर द डैम्पिंग मॉडल हियर. सो द आउटपुट इज वी कैन सी दैट द 1 upon 2hs plus D to simplify this load model. Now the turbine models. So turbine model you can see that K delta PV Kf upon 1 plus ST1 delta PM. So first order leg turbine model is shown in the figures with the single turbine constant. So the first order leg turbine modeling, the equations of this is represent the GTS is the transfer functions of the turbine. Here you can see that the delta PV is the change in the steam valve output due to the delta PM is the change in the turbine output is given. So these are the simplification of our equations. The Kf Kt upon 1 plus St1. Now the governor models. So on the same basic of the governor system is model you can see. So the for the electrical load increase suddenly, then the electrical power become less than the mechanical powers. So the output of the governor at the steady states is given is delta PM equal to delta P reference minus delta omega by R. So this power shortage is overcome by supplying the kinetic energy in a rotating system. So these reductions is kinetic energy result into fall the turbine speed and the generator frequency. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जनरेटिंग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी इंट्रोड्यूस करते हैं. दिस चेंज इन द स्पीड इज detected by the turbine governor system to adjust the turbine input valve
to change the mechanical output power to the turbine speed. So इस इक्वेशन से हमको to set the reference power and we get the power given by the governor speed changing. तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी स्टीम थ्रू हम इंसर्ट करेंगे और जो टर्बाइन की स्पीड है वो कंटिन्यूसली सेंसिंग करके हम एडजस्ट करते हैं स्पीड यूजिंग ऑफ ग्रीस. यहाँ पे हम टी रिफर्स जो रेफरेंस लिखा है उससे. देन आफ्टर the governing characteristic is represent the R equal to minus delta F upon the delta PM is the slope. So it is the regulations constant which does not the sensitivity of the generator to change the frequency, and the hydraulic amplifier transform these signals to the steam or valve gate positions to the power changing. यानी कि इस स्लोप थ्रू हमको पता चलेगा कि कहाँ पे हमको. सो द इक्वेशंस इज रिप्रेजेंट इज द फाइनल इक्वेशंस इज डेल्टा पी इज इक्वल टू के जी अपॉन 1 प्लस एस टी जी बाई पी जी एस, वेयर द पी एम इज द चेंज इन द टर्बाइन मैकेनिकल पावर आउटपुट, पी डेल्टा पी reference is the change in the reference power settings. For the steam turbine, the governing changes the mechanical output of the turbine by the increasing or decreasing the amount of the steam entering into the turbine from the steam valve. So our equations, this is the turbine model, is now the final equations is like this. So these are the generator model systems. So today we are studying about the speed governing mechanisms, then after the mathematical models. These two questions is asked in your GTU exam. One question is must be asked in GTU exam. So if any query regarding this topic, you can call me. If any questions regarding this topic, you can mail me. My mail ID and the contact number is in your screen. Thank you.